as India's leading agrochemical company, Dhanuka Agritech Limited. And with immense honor, let us welcome the chairman of Dhanuka Agritech, Mr. R.G. Agarwal. Now, I request our dearest director, Mrs. Shiny Dominic, to felicitate Sri R.G. Agarwal. Thank you very much. I also invite Ms. Neha to welcome Dr. P.K. Chakravarti by presenting the token of gift. On this special occasion, let us have a glance of Krishi Jagran's journey throughout the years. Today is considered one of India's most respected and diversified agri-media companies. Krishi Jagran, for its years of consistent coverage on agriculture and that too in various languages, has managed to gain a place in Limca Book of Records for the largest multilingual agri-rural magazine. Published in almost 12 languages with a combined readership of nearly 15 million. Yes, you have heard that right, and that's just the beginning. Krishi Jagran today is also named to reckon with when it comes to social media platforms. Viewership is hitting crores every month, and with ever-increasing subscribers thanks to our farmers and followers. Working primarily on building farmer trust has helped Krishi Jagran reach the pinnacle where it is today, and it is just growing and going higher and higher. With 12 YouTube channels in its media bucket and 8 lakh plus daily visitors on its portals, Krishi Jagran is taking every bit of info to farmers and trying to make agri-media self-sufficient, so that when we speak, everyone does take a note. All that, Krishi Jagran also has a wide portfolio to help farmers, from Farmer the Brand to Farmer First, from FTP Organic to Tractor News, from everyone's favorite and talk of the town KJ Chopar, wherein we bring eminent personalities and talk about the business scenario. Last but not the least, Farmer the Journalist. As the name says, we are making Farmer the Journalist, giving them the lifetime opportunity of sharing their reports from their village via videos and stories using their mobile phones. More than 200 farmers have already been trained as journalists. Mr. MC Dominic is a man behind Krishi Jagran and every initiative that you have heard and seen till now. And Mrs. Shiny Dominic, the company director, is the lady behind this successful man. Through her hard work and dedication, she has completely transformed Krishi Jagran and made it India's top agri-media house. But for them, all this wasn't enough. So they went on to create Agri, Agriculture Journalist Association of India. Lately, none other than Honourable Minister Purushottam Rupala unveiled its official emblem amidst the top dignitaries joining the launch physically and virtually. Not to miss was the President of International Federation of Agricultural Journalists, Lena Johnson, who to attend the launch and unveil Agri's official site. Mr. MC Dominic and his team are leaving no stone unturned to help farmers reach their voice to every nook and corner of the nation, including government offices. In one line, Krishi Jagran is out to empower farmers for a greener future ahead. Now, let us look into the successful journey of Dhanuka Agritech Limited. शाम सूरज को वो ढलना सिखाती है,
क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वालों को होती है तकलीफ और ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। कहते हैं सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, लेकिन ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। और आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने काफी टाइम से इंडस्ट्री में लगन के साथ काम और मेहनत करके ये सफलता हासिल की है। और वो शख्स हैं मिस्टर आरजी अग्रवाल। आरजी अग्रवाल धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन हैं। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ कॉमर्स में डिग्री प्राप्त की है। भारतीय कृषि में योगदान देने का उनका जुनून काबिल तारीफ है। प्रभावी निर्णय लेने के कौशल के साथ साथ कई कार्यों को प्राथमिकता देने और प्रभावी ढंग से निपटने की उनकी क्षमता ने व्यापार उद्यम को भारत में सबसे तेजी से बढ़ती एग्रोकेमिकल कंपनी में बदल दिया है, जिसे 3 बार बेस्ट अंडर अ बिलियन कंपनी का दर्जा भी दिया जा चुका है। एग्रोकेमिकल उद्योग में पिछले 5 दशकों से अधिक के संपन्न और अमूल्य अनुभव ने कंपनी के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। आपको बता दें कि कृषि के माध्यम से भारत को बदलने की अपनी आकांक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कृषि रसायन उद्योग और कृषक समुदाय में परिवर्तन लाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। और इतना ही नहीं, आरजी अग्रवाल क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जो सभी भारतीय एग्रोकेमिकल कंपनियों के शीर्ष चैंबर हैं। गौरतलब है कि मिस्टर आरजी अग्रवाल को कृषि उद्योग में उनके जबरदस्त योगदान के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि वह आगे भी कृषि क्षेत्र में यूं ही अपनी सेवाएं देती रहेंगे। तो वहीं कृषि जॉब को भी आरजी अग्रवाल का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहा है और आज एक बार फिर से केजी चौपाल में मौजूद है मिस्टर आरजी अग्रवाल। Now, I use this special occasion to invite our dearest founder and editor-in-chief, Sri MC Dominic, onto the stage to deliver the keynote speech. I think there's no keynote speech. We are the key man from the agri sector to talk to us. Okay, you hear me every day. See, one of my inspiration I always do everyone, that is Agarwal sir. Because I remember meeting him around 20-23 years back at Agarwal in Soapings and interviewing that time. The josh he had that day, I think it has increased after 22 years. It has not diminished. That you see him today talking in Bareilly Agricultural University, and next day you see in Dhanu, and another day you see in Punjab.
I do not know how he is able to reach out to so many areas in a small time. The way he traveled, he talked. And his principle, what I understand is the best. He says the farmer earns, then naturally the industry also will earn, the government also will be happy. So his ultimate aim is to make the farmer big. And he makes every effort to that and he fights for that right that we have seen all through our life. With our own, we had been witness to many of his struggle for that. So what I wish, let us listen to the man who has changed the agrochemical industry, not only agrochemical industry, the fortune of billions of farmers in India, that we can say. And the growth of farming industry is also linked to the growth of chemical industry also in India. And if we talk of that chemical industry, we can see how Agarwal has played the key role in that. So I request sir to come and address our audience, our team, please. Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. First of all, I like to congratulate the founder team of this Krishi Garden Group and all youngsters as a part of this organization. To be honest, I was not knowing Krishi Garden is having this big network, which I came to know after coming there today. All of you know that we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and you also have won this our country's flag, which our company is distributing 10 lakh flags all over India, and a wall clock 50,000 having same symbol Azadi Ka Amrit Mahotsav. Now Azadi Ka Amrit Mahotsav, what is the meaning of Azadi Ka Amrit Mahotsav? You are all well to do, have both time meals. But what is this for farmer? So my time, it is already 1. So I will speak 15 minutes and 15 minutes you can take question answer or whatever way. Okay, sir. And English language is okay? Yes, if he makes it, both will be good, sir. Some farmers also are out listening to you. Farmers are listening. Not here, online. Okay. So I will use Hindi English mixed language. आज किसान के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव, जब तक उस किसान का पेट नहीं भरा जो हमारा पेट भर रहा है, तब तक उसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का कोई मायने नहीं। आज कृषि जागरण जो किसानों को सही मायने में जागरण करने का काम कर रहा है, मुझे उनके साथ जुड़ के बड़ी खुशी है। और आपके माध्यम से मैं अपनी बात आप लोगों तक नहीं, जो आपके इस चैनल में किसान लाइव जुड़े हैं, उनको भी बात अपनी पहुंचा पा रहा हूँ। तो आज किसानों के लिए अमृत महोत्सव असली उस दिन होगा जिस दिन हर किसान का पेट भरा होगा, उसके परिवार का, और हर किसान के, हर हिंदुस्तानी के नीचे अपनी छत होगी। अगर ये नहीं है मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव का कोई मतलब नहीं। मैं कंपेयर करता हूँ, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और जापान जो 1945 के वर्ल्ड वार 2 में जहाँ एटम बम गिरे उसमें बर्बाद हो गया था। आज जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं? नो कंपेरिजन। And if we ask from ourselves or we study, what is the reason that Japan today is the leader and we are nowhere? Friends, Japanese respected their flag, Japanese respected their culture, and to be honest, when we became free, we got freedom.
we were told that now we are Azad. But friends, everything comes with some responsibility, and our freedom we have not taken with responsibility. That is the reason जो सरकार में काम करते लोग और सरकारी प्रॉपर्टी को जलाते हैं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, सब जानते हैं क्या होता है। ये सरकार की प्रॉपर्टी कहाँ से है? वो तो हमारी और आपकी है, हमारे आपके टैक्स से बनी है, वो हमारी प्रॉपर्टी है। तो आज लोगों में ये भ्रम कि ये सरकार, भाई सरकार कौन है? सरकार हम और आपसे है। तो आज जब तक हम देश की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी को नहीं समझेंगे, और सबसे बढ़िया मैं किसानों के बात पे आ जाता हूं कि किसान की आमदनी, वैसे तो हम कहते हैं कि विश्व में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हैं जीडीपी एग्रीकल्चर में, लेकिन प्रति हेक्टर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें तो हम विश्व के डेवलप कंट्री से बहुत पीछे हैं। चलिए मैं विश्व के डेवलप कंट्री की बात नहीं करूं, अगर डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, चक्रवर्ती साहब, मेज की बात करें तो अमेरिका की क्या यील्ड है हमारे से 4 गुना ज़्यादा। चलिए वो तो डेवलप कंट्री मान लेते हैं। हम अपने पड़ोसी चाइना पे आ जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट हमारे जैसा है। चाइना की एग्रीकल्चर से जीडीपी हमारे देश से 3 गुना है। और जो मेरा एक फोल्डर है थैले में, उसमें आप देखेंगे मैंने ये एक्चुअल फिगर दी है एफएओ की वेबसाइट से कि हमारा एग्रीकल्चर लैंड चाइना से 3 गुना ज़्यादा, नहीं सॉरी गलत कहता हूँ, 30% ज़्यादा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हमारी रेनफॉल चाइना से, चाइना की 600 mm प्लस, हमारी 1000 mm प्लस, और जीडीपी हमारी $460 बिलियन और चाइना की 1004 बिलियन। उनकी कम लैंड, हमारी ज़्यादा लैंड, उनकी कम बारिश, हमारी ज़्यादा बारिश, फिर भी हमारी जीडीपी 1/3। उसके पीछे हमने फिर स्टडी करने की कोशिश की कि क्या कारण है, और आप अपने, आपके 12 लैंग्वेज में मैगजीन्स हैं, लाइव मीडिया है, तो लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए कि हमारा किसान इतने पीछे क्यों है। चाइना में हमसे कितना गुना पेस्टिसाइड यूज होता है? हमारे यहाँ 300 ग्राम प्रति हेक्टर, चाइना में 13 किलोग्राम। जितना फर्टिलाइजर हमारे यहाँ यूज होता है, चाइना में उससे दुगने से ज़्यादा यूज होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कल से ब्लाइंडली फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का यूज करें। देखिए आज विश्व का कितनी लैंड हमारे पास, दरअसल कितनी लैंड, 142 हम बोलते हैं, लेकिन 180 नहीं, वो वर्ल्ड का परसेंटेज देखें तो वर्ल्ड का परसेंटेज 16% बहुत कम हमारी लैंड है। अगर फ्रेश वाटर देखें तो वर्ल्ड का 4% पानी हमारे पास है। विश्व की 18% पॉपुलेशन का हम न सिर्फ पेट नहीं भर रहे हैं, लेकिन आज जब वर्ल्ड में फूड क्राइसिस है तो हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी उन देशों को जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं वहाँ फूड दे रहे हैं। तो आज मैं 4 पॉइंट की बात करता हूँ कि हमारे किसानों की आमदनी 1/3 क्यों। कुछ किसान बड़े किसान हैं जिनकी पैदावार आमदनी चाइना के बराबर भी होगी, अमेरिका के बराबर भी होगी, लेकिन हम जब बात करते हैं तो देश की एवरेज की बात करते हैं कि हमारे देश की एवरेज पैदावार क्या है या एवरेज किसान की आमदनी क्या है। तो सबसे पहले हमारे किसानों को नई तकनीक नहीं मिल रही। आप किसान के पास जाके गाँव में पूछे आपके जर्नलिस्ट कि आपके पास नई तकनीक या टेक्नोलॉजी बताने के लिए कोई आता है तो कौन आता है?
तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी कि भाई क्या। और इस सच्चाई को 2008 का बजट पेश करते हुए पार्लियामेंट में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने कहा था, our extension system has collapsed. This is the words of that time finance minister. Our extension system has collapsed and we are looking for some alternative. But to be honest, so far alternate has not come. So until as we give the knowledge, I was talking in one program कि या तो आप मछलियां बांटें या लोगों को मछली पकड़ने का नेट दें और उनको मछली पकड़ना सिखाएं। तो आज हमारे देश में जो सब्सिडी की प्रथा चली है, अरे एक आदमी को आप कितना सब्सिडी दे दोगे? अगर आप उसको नई ज्ञान नई तकनीक दे देते हैं तो उसको कोई सब्सिडी नहीं होगी, रादर वो अपनी पैदावार बढ़ाकर आपके देश से आपको एक्सपोर्ट बढ़ा के देगा। अभी 2 दिन पहले ही नीति आयोग के साथ पीएम साहब की और दूसरे मिनिस्टर्स और सभी स्टेट के सीएम्स उसमें आए हुए थे और उसमें कृषि के ऊपर भी और एजुकेशन के ऊपर 2 चीज़ों पे विशेष चर्चा हुई थी। और उसमें भी यही बात हुई कि हम 1 लाख करोड़ खाने का तेल बाहर से मंगाते हैं, दालें बाहर से मंगाते हैं, तो कैसे हम इनका पैदावार बढ़ा सकते हैं। और किसान को आप पॉलिसी दीजिए, सही इनपुट दीजिए, फैसिलिटी दीजिए। तो आज जब 65 में हम भीख में गेहूँ मांग के खाते थे अमेरिका से, आज हम सेल्फ सफिशिएंट है, चाहे गेहूँ हो या चावल हो, तो इन फसलों में हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। सिर्फ नंबर 1 किसान को ज्ञान मिले। नंबर 2, आज किसान ने पैदावार तो कर ली, लेकिन अगर बाजार उसको नहीं मिलता तो उसको सही प्राइस मिलना चाहिए। पीछे सरकार ने 3 बहुत अच्छे कृषि के लिए कानून बनाए थे, लेकिन कुछ मुख्य बात लोगों की वजह से वो कानून अमली जामा नहीं देख पाए, सरकार को मजबूरी में वापिस लेने पड़े। अब इस साल रबी में गेहूं एमएसपी से ऊपर बिका, मस्टर्ड एमएसपी से ऊपर बिकी, तिलहन ऊपर बिका, जो ऊपर बिका। आज बताइए किसी किसान ने एमएसपी पे बेचा क्या? तो सरकार यही तो कह रही थी इन 3 कानूनों में कि भाई जहां किसान को ज्यादा मूल्य मिले वहां जाके किसान बेचे। तो आज देखिए विश्व में जहां जिस क्षेत्र में कंपटीशन आया है उस क्षेत्र में तरक्की हुई है। पहले एक फोन के लिए लाइन लगती थी, 10 साल की बुकिंग होती थी। एक कार के लिए 10 साल की बुकिंग, एक स्कूटर के लिए 10 साल की बुकिंग। कभी इमरजेंसी में आपको ट्रेवल करना पड़ जाए तो आपको ट्रेन की टिकट के लिए सिफारिशों के पीछे भागना पड़ता था। आज हर एक की जेब में 1, 2, 3 मोबाइल है। जो कार्ड चाहिए आपके पास घर पे आके डिलीवरी मिलती है। जिस एयरलाइन का टिकट चाहिए आपको ऑन द स्पॉट मिलता है, ट्रेन की टिकट मिलती है। तो आज ये क्यों? ये सब कंपटीशन की वजह से। तो कृषि में कंपटीशन से मेरा मतलब है खुली मार्केट। किसान को हक होना चाहिए। जैसे हम अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं तो किसान को भी हक होना चाहिए कि वो अपनी पैदावार जहाँ उसको अच्छा प्राइस मिले बेचे। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। अभी चर्चा हो रही थी, एफएओ कहते हैं कि 40% पैदावार नष्ट हो जाती है। हमारे पार्लियामेंट में सरकार उत्तर देती है 10 से 30% तक पैदावार खराब हो जाती है। पीछे 2008 में IRI ने एक एस्टिमेट किया था, अलग अलग फसलों में क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरे माहौल को देखते हुए 8 से 90% तक की फसल का नुकसान हो सकता है। 2002 में 37th स्टैंडिंग कमेटी बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर में। उन्होंने एस्टिमेट किया था 90,000 करोड़ रुपए का लॉस 2002 में। और उनकी रिकमेंडेशन थी कि आप बीडीसाइड और फंगीसाइड का यूज बढ़ाएं
क्योंकि इनकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे देश में रिपोर्टें बन जाती है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पीछे तो बिल्कुल ही नहीं था। लेकिन अब कृषि के ऊपर जो सरकार का जोर है, लेकिन उसमें भी सरकार जब तक सच्चाइयों को समझकर, खेती ऐसा विषय है कि किसी कॉन्फ्रेंस रूम ऐसी हाल में बैठ के कृषि को नहीं समझा जा सकता। कृषि को समझना है तो खेत के ऊपर जाकर ही कृषि को समझना पड़ेगा। तो किसान को सबसे पहले ज्ञान मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसके लिए मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे देश में 14 करोड़ किसान 6.5 लाख गांव में रहते हैं। किसके लिए इतना, कौन प्राइवेट सेक्टर है या कौन मीडिया है इतने लोगों तक पहुंच सकता है? तो सरकार को देखना चाहिए। आज सरकार सारे पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है। क्यों बेच रही है? वो सब घाटे में चल रहे हैं। वहाँ किसी का ये नहीं है कि अभी मेरी कंपनी है ये प्रॉफिट में चले। वहाँ तो ये भावना की सरकार की, मैं पहले भी कह चुका हूँ, सरकार हमारी है, सरकार की हर प्रॉपर्टी हमारी, हमारे टैक्स है। तो जब तक किसी की कमिटमेंट नहीं होगी, पैशन नहीं होगा कि ये मेरा काम है, मुझे बड़ी खुशी है आप बैठे और आपने छोटे से शुरुआत की और आज आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, कितने किसानों तक आप अपनी सच्चाई की बात कर रहे हैं। तो मैंने 2 बात रखी। तीसरी बात है किसानों को पानी। भाई आज फ्री बिजली, फ्री पानी, जितना जरूरत नहीं है उससे दुगना तिगुना 4 गुना फ्लड कर देते हैं पूरे खेत। जहां पानी है वहां दुगनी पैदावार है, जहां रेन फेड है वहां आधी पैदावार है। तो आज वाटर का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। और किस क्रॉप को लगाना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां वाटर टेबल बिलो डेंजर जोन आ गई है, क्या वहां पे हम 1-2 साल पैडी उगाकर अपने आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या प्यासा मारना चाहते हैं? हम सबको सोचना होगा। अगर हमारे बच्चे प्यासे मरे तो उसका ब्लेम किस पे होगा? हम सभी लोगों पर होगा। हम कोई बच नहीं सकते। लोग पूछेंगे कि हमने क्या किया। तो आज सरकार से भी मेरा कहना है कि कानून बनाकर पानी जितना अवेलेबल है उसके हिसाब से वहां फसल उगाई जानी चाहिए। तो पानी, फिर पानी के साथ साथ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1 लाख करोड़ दिया है, लेकिन किसान, बड़े किसान ले जाते हैं फायदा। जब भी जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, आप जाके गांव में देखिए कि कितने लोगों को उसका फायदा मिला। जो डायरेक्ट 6,000 रुपया सरकार ट्रांसफर कर रही है डीबीटी, तो उसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी स्कीमें बनती है उसका बार बार रिपीटेड फायदा कुछ बड़े किसानों को मिलता है। तो सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जिसका फायदा हर किसान को मिले। आज पेस्टिसाइड, जैसे हम कहते हैं इंश्योरेंस, या जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो मेडिसिन लेते हैं, तो वैसे खेती में बीमारी आती है तो मेडिसिन इस्तेमाल, पेस्टिसाइड व्हाट इज इट? इज प्लांट मेडिसिन। तो उसके बारे में लोगों को बहुत गलतफहमी है। मैंने आपको एक फोल्डर दिया था कि हमारी सरकार का ऑल इंडिया रेजिड्यू नेटवर्क है, उन्होंने 2 लाख से ज़्यादा सैंपल टेस्ट करें, उसमें सिर्फ 2% सैंपल में रेजिड्यू एमआरएल से ऊपर मिला। और रेजिड्यू एमआरएल से ऊपर मिलना ये इस बात की कोई नहीं है कि ये फूड सेफ नहीं है, क्योंकि सरकार जब लिमिट फिक्स करती है तो 100 टाइम सेफ्टी फैक्टर यूज करती है। तो इसलिए ये गलतफहमी बाहर निकालनी चाहिए। यूरोप वगैरह में भी जाएं तो वह 4% सैंपल में रेजिड्यू अबव एमआरएल। तो हमारे देश में वो बहुत से अखबार वाले या मीडिया वाले आपकी थाली में कितना जहर है, भटिंडा टू बीकानेर कैंसर ट्रेन,
बठिंडा टू बीकानेर कैंसर फ्री। पंजाब में कैंसर बहुत ज्यादा। मैंने आपको फोल्डर दिया है जिसमें WHO, FAO और भारत सरकार का डेटा है कि पंजाब का हिंदुस्तान में कैंसर केसेस में 24वां नंबर है, जबकि मेघालय, मिजोरम, वहां कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, वहां नंबर 1 नंबर 2 है। विदेशों से देखें तो हमारा नंबर 178वां है कैंसर केसेस में। तो ये जो भाई वीकेंड बठिंडा टू बीकानेर ट्रेन चलती है, पंजाब में कैंसर का ट्रीटमेंट का इलाज नहीं है। बीकानेर में प्राइवेट सेक्टर ने एक ऐसा हॉस्पिटल बना रखा है जो कैंसर के लोगों का, पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट करती है, और उनके साथ जो अटेंडेंट्स होते हैं उनको भी रहने का फ्री खाना देती है। तो इसलिए पंजाब के लोग बीकानेर इलाज के लिए जाते हैं, जिसको हमारे कुछ मित्रों ने, जो NGO, इनको वहां से बाहर से पैसा मिलता है कि इंडिया की इमेज खराब करिए। इंडिया जो आज प्रोग्रेस कर रहा है, इंडिया की ऐसी इमेज पेश करिए कि भारत आत्मनिर्भर ना बन सके, भारत तेजी से तरक्की ना कर सके। अब भारत जिस तरक्की के रास्ते पे आ चुका है, मैं नहीं समझता किस तरक्की के रास्ते को कोई रोक पाएगा। और लास्ट मेरा पॉइंट है, जो इनपुट किसान यूज करता है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे सीड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, हमारे देश में एक पैरेलल इंडस्ट्री नकली की चलती है। अभी 4 तारीख को फिर दिल्ली से, लुटियन जोन से 20 किलोमीटर रेड हुई, जहां 4 कंपनियों का नकली पेस्टिसाइड आया। पिछले साल भी दिल्ली में 6 रेड हुई। आज हमने फिक्की के मीटिंग में नकली कीटनाशकों की एग्जीबिशन लगा दी, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे कि नकली मिलने के बावजूद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं उनको जेल में दिया जाता। आज IPC, आज किसी का भी नकली प्रोडक्ट बनाना तो ये IPC के साथ कोड 20 है। इंसेक्टिसाइड एक्ट कहता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो आज अगर कंप्यूटर में कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर किसान को नकली बीज, नकली फर्टिलाइजर, नकली कीटनाशक मिलेगा, आप समझिए कि आपका कोई घर का बीमार है, उसको नकली दवाई मिल जाए और वो मर जाए, तो क्या आपके दिल पर बीतेगी। तो हमारा किसान, उसके दिल पर क्या बीतती है, कि हम सब लोगों को एक किसान बनकर सोचना होगा। और जब तक हम किसान की तकलीफ को नहीं समझेंगे, और ये आप समझ लीजिए कि आज 70% आबादी गांवों में रहती है, और आज ये हमारे शहरों का क्या हाल है। अगर ये सारी आबादी शहरों की तरफ प्लान करें तो शहरों में क्या हो जाएगा। तो आज जैसे हम अच्छी लाइफ जीते हैं, तो हमारे किसानों के बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं, तो उनको भी अच्छी लाइफ जीने का हक है, और उनको मिल सकता है। अगर मैंने ये पॉइंट बताए, अगर उनको ये सब मिल जाए तो उनकी आमदनी दुगनी नहीं, चाइना के बराबर 3 गुना हो सकती है। और हमारे देश में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना 2025 तक, और जिसमें $1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर से हो, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ एग्रीकल्चर का $1 ट्रिलियन नहीं, $1 ट्रिलियन से भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बशर्ते कि सरकार इन समस्याओं को समझे। और बड़ी बड़ी कमेटियों की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता, कोई बात है कमेटी बना दो, बात खत्म। अरे छोटी सी बात है, किसान से पूछो तेरी समस्या क्या है, उसका हल कर दो, बात खत्म हो गई। तो मैं अपनी बात इसी बात से समाप्त करूंगा कि आज हमको सबको मिलकर किसान को भी अपना भाई समझना है और उसको आगे बढ़ाना है। आप सब लोगों का खास तौर से, मैं नाम आपका सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट।
Domini sir. So Domini sir and his team, you deserve all applause and congratulations for your wonderful work. Thank you. One day. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Now, thank you so much, sir. Now, I invite Dr. P.K. Chakraborty to the stage to share his wisdom with us. Thank you. Very good afternoon to all of you. Good afternoon. Agarwal sir, Mr. Dominic, Mr. Saini, and all the youngsters, all other colleagues from PC Jagran. It was, we must congratulate all of you, the entire team, for a well-lit activity which you are doing. And you are, in fact, the actual media is the one who can take the right message, because the message can be tilted in both ways. But the message which Dr. Agarwal has already said, I don't think there's any other major issues which are lying there. We know agriculture sector, we know for the last 2-3 years the country, the whole world is going through pandemic. But then this particular sector is the only sector which has enough buoyancy. As he said that 18% of the world population is being fed by India from only 4% of the arable land in the world. So we have so much power in that. And this, if everything is done in a proper and enabling, with the enabling policies, agricultural policies, the same area can develop $1.23 trillion at the rate of China. Because as he has already very well narrated that we have very good resources. Natural resources are very much well established in the country. We have 15 agroecological conditions. We grow 554 crops in the country. But then we need to have the enabling policy. This is one of the policies which is very important, and that comes from Government of India. Government of India definitely under our Honorable Prime Minister is doing so many positive steps. And in fact, in my 62 years and with now my 35 years of career in plant protection, I see this particular area has a lots and lots of potential, and that can be boosted if the enabling policies are coming with the plant protection. And we can boost, as I myself say that today we have all-time high production of 305 million metric tons of food grains and all-time high of horticultural production, which is about 335 million metric tons, 333 million tons. And then the losses, can you explain how much we are having because of the production, because all other issues here start. So the losses which are happening today is 65 million metric tons of food, which is not even the production of the whole country of Bangladesh or neighboring countries, any of the countries. 65 million metric tons of food grains are lost due to this crop protection issue, and 60 or nearly 70 million tons of horticultural crops. And this losses, if we can adequately take care, it can feed 30 crore people, and so I don't think our population will go to that level. So without having any increase in productivity, simply from protecting the losses, we can save these things, and we can save the seeds, the whole the country. And then this particular part of the, we can also become global economy, will contribute to the whole world. And I don't have any qualms in telling that in days to come, with the enabling policies,
with the supporting policies and with the advanced technologies. Dhanuka definitely is one of the agro industries with a very wide innovative ideas, and we are initiating new laboratories, new factories, and also with that the advanced technologies such as use of drones. This is being popularized, and we have been trying to increase awareness, stewardship among the farmers for the greater judicious use of agrochemicals. And with these things, today we have only 292 chemicals compared to China, which has 900 plus, compared to the whole world, which have more than 1100 different molecules. So all these new molecules which have been there, so we have one of the robust technology. Robust does not mean that it should be so stringent that it delays the technology. As per our CIBRC rules, we have pesticides should be registered within 1 year, which can be extended by 6 months also further if needed. But then it takes about 3 to 6 years, and this is, I think, in the country we have one of the most stringent, which is not required many times because of government's own certain limitations are definitely there. We have manpower deficiency and all those things. But then this needs to be speeded up so that we can gear up with the whole world, and we are just second to China. But our production 460, our GDP 460 billion compared to 1.03 trillion of China. With the same kind of lesser natural resources compared to us, by 30 to 40% natural resources, we are able to have that, and we can definitely with all the other the conditions which he said, we will be again interacting with the farmers for a better interaction, and with all other technologies which will be coming forth. So with all those technologies, we will be again joining with the farmers, and so that the revolution which has already been initiated from the Azadi time, as Agarwal has seen more of those time when country used to we used to survive from ship to mouth, and now today we are having $50 billion US worth of our exports. And then, but the problem is our post-harvest technologies and all those technologies are very poor that we are exporting, despite having the world's largest horticultural production, vegetables and all. Our presence in the international market is less than 1%. Whereas if you see Latin America alone, it feeds the whole America, including US and all advanced countries. About 70% of all horticultural produce and all those things can go from Latin America. But then these are the areas we have sufficient amount of, we are food secure nation, but our resources need to be well required. We need to make it more exportable, and we need to increase our export, so that increasing export means not only feeding the domestic requirement which we have already established the food security, but earning foreign exchange through the additional exports which we are going to produce. So that is going to make our agricultural income by 1 trillion technology. And as I have said, that still India has a lot of scope, because our agricultural growth is now nearly 4%, around 4%, whereas the other countries like United States and developed countries, they have reached an yield plateau beyond which they are not going to increase. But at the same time, sometime our calculations may go haywire when we find that our factor productivity, if we calculate, now we are producing 3 crops in the same season. Although there may be some kind of, I have seen some of the farmers who produce 6 tons of wheat, and in 2018-19 when I was 18 ADG of plant protection, our DG had given target to the director of IIWBR that we need to have 8 ton production per hectare. Sir, we have 8 ton, but some of the farmers, but we need to scale it to the entire and spread it to the whole country. Then only we have to do. But it is not an exceptional thing. As Agarwal sir has already rightly projected, we have
ability, capability, resources, and some of the farmers are already harvesting the highest amount of wheat, 8 tons, 6 tons, but then our average goes to 2 tons. So this needs to come up, and all the farmers need to progress. Similarly, our cotton, we are the highest producer of cotton in the world, but unfortunately, we rank nearly 45th among the cotton growing countries. Their productivity is again very less but in certain areas like irrigated, because we have the largest area of 120 lakh hectares in the world, 12 million hectares in the world. But then in 60 to 70% of the area, with the Maharashtra having more than 40 lakh hectares, so the productivity is brought down from there because they have 70% area is under rain-fed cotton. If rain is there, this year unfortunately there is a tremendous amount of rain. Even today it is raining. So too much of rain is also very bad. So as he has rightly suggested that water rationing has to be done. Our government and we all should aim, as Dhanuka has already launched a big theme of खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, और अगर वो उस बात को हम लोग ठीक से कर सके, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सके, जो बारिश के टाइम जो पानी आ रहा है अभी बहता चला जा रहा है, जो बाढ़ में पानी जा रहा है वो बहता चला जा रहा है, अगर हम इस पानी को रिजर्वायर में ला सके तो किसी तरह से ले लें, ताकि दूसरे सालों में जहाँ पर पानी की कमी होती है, अगर हम और वहाँ का प्रोडक्टिविटी अगर देखें तो 200 से 300 केजी लीड पर हेक्टेयर है महाराष्ट्र का, कंपेयर टू पंजाब, गुजरात और वो बेल्ट जहाँ पर 700 के ऊपर केजी लीड पर हेक्टेयर। तो वो क्या होता है कि वो उसको कुछ स्टेट में, बिकॉज और प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज वेरी स्क्यूड, कुछ एरिया में जहाँ पर ज़्यादा रेन है वहाँ पर, तो इन सब को हमें पानी का सदुपयोग करना पड़ेगा। ये सब इसमें खाली हम लोग ही नहीं कर सकते, किसान अकेले नहीं कर सकते या इंडस्ट्री अकेले नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फर्ज है, जिम्मेवारी है, जिसके थ्रू हम लोग पूरे पानी का रिसोर्स तो हमारे पास इतना 1000 मिलीमीटर के ऊपर है, लेकिन उसको अगर हम ठीक से बचा के रख सकें, ठीक को कंजर्व कर सकें, तब जाके जहाँ तक कैंसर की बात है, मैं सबके साथ सहमत हर समय हूँ, जब गवर्नमेंट में था और जब नहीं हूँ तब भी मैं जानता हूँ कि आज तक हम वो देख रहे हैं कि कहीं पर कोई ऐसा लिंक मिल जाए हमें जिसमें बोले कोई कि इस पेस्टिसाइड से कैंसर होता है, बिकॉज WHO के हिसाब से WHO ने 122 क्लास 1 कार्सिनोजन जो निकाले हैं, जिसमें कोई भी पेस्टिसाइड ऐसा नहीं है जो उस कार्सिनोजन ग्रुप में पड़ता है। सो EITRC as well as in the world, the aim is that no carcinogenic substances should be involved in to be used as a pesticide or chemical. So ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई लिंक नहीं मिला। कानून को साहब उसको अभी रिवाइज कर रहे हैं, जो उन्होंने लिखा था, he was additional secretary the Ministry of Health and Family Welfare, वो उसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके बेस पे उन्होंने पाया कि अभी तक कोई हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है, कोई तथ्य नहीं मिला कि पेस्टिसाइड से कैंसर होता है, कहीं पर भी नहीं मिला। हमने देखा कि विद इनफ ऑफ वाटर, पंजाब एरिया में ड्रेनिंग ऑफ वाटर, इट हैज टच्ड द डेंजर लेवल, जहाँ पत्थर पहुँच गए हैं वहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें से उससे हो सकता है, हैवी मेटल से हो सकता है या रेडियो एक्टिव मटेरियल से हो सकता है, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब इन सब की मात्रा पाई जा रही है बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एवरीवेयर ऑल ओवर। दीज आर जियोजेनिक इन नेचर, कोई डाल नहीं रहा, कोई आर्सेनिक डालता नहीं है, कोई नाइट्रेट डालता नहीं है, बट बिकॉज ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज नॉट ओनली एग्रीकल्चर, दीज थिंग्स आर जनरली जनरेटेड एंड देन दिस इज नॉट ड्यू टू पेस्टिसाइड। So these are a few things that we have. I was for 26 years. I was the government official. I worked as an important research institute. I know what was the most consuming advanced technologies like grape crop and all those things. And so we are definitely
pesticide consumption is increasing now. But then this is not a very healthy thing because using sublethal doses of pesticide is very bad because it creates lots of resistance. So जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं, जब हम कोविड होता है कोई, तो 5 एजिथ्रोमाइसिन तो देते ही हैं, या कोई भी बीमारी के लिए आपको कोविड के लिए कोई एंटीबायोटिक नहीं है, बट तो दैट सेकेंडरी इन्फेक्शन शुड, तो 5 के 5 आप अगर पहले भी ठीक हो जाए तो 5 के 5 पूरा करना पड़ता है ताकि 1%, अगर आपने 3 लेके आज बुखार खत्म होगा और हम छोड़ दे दो लेना, तो जो 1 से 2% जो बैक्टीरिया या वायरस जो रह जाता है बॉडी के अंदर, वो दैट इमर्ज एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग विद genetic recombination occurs in such a way that they are able to tolerate. So हमें sublethal dose भी नहीं यूज करना, तो 300 ग्राम पर हेक्टेयर जो हम करते हैं on an average, you can calculate 55,000 tons over nearly 180 million hectares of the land. If you divide, you can find. So whatever is the hectare. So मेरे इसको हमें sublethal dose करने कोई फायदा नहीं है, या तो मत करें तो ऑर्गेनिक उसमें खेती का भी हम लोग पूरे हम ये नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक खेती में यूरोप का अपना कैलकुलेशन है, यूरोप का अपना फाइंडिंग है कि अगर पूरे यूरोप के खेती में अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन शुरू करें तो 50% रिडक्शन हो जाएगा उसके प्रोडक्शन में, अगर ऑर्गेनिक के ऊपर डिपेंड करें। सिमिलरली उन्होंने देखा कि लेग्यूम्स में 30% रिडक्शन ओवर द नॉर्मल कल्टीवेशन होता है और बाकी नॉन लेग्यूम्स में 40% के ऊपर लॉस रिडक्शन होता है। So organic is a luxury for the country. Of course, we can, even though we do not intentionally, we are not producing, but then India is the largest producer of organic in the world. But then हमें देखना है कि we have to sustain our food security. It should not be organic, should not be as a compromise for our food production. So everybody is in favor of those technologies, but अगर हो सके तो करें, पर अगर नहीं हो सके तो सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी को सस्टेन करना पड़ेगा। फार्मर्स income has to be tripled or doubled, whatever it is, at least doubled till 2025, and there is a potential, and we need to use our whole wisdom in following the technologies and adopting the technology and using them judiciously, so that खाली कट कर देना, pesticide reduce कर देना, low number of pesticide users, as Agarwal sir has rightly pointed, these are medicines, these are insurance to farmers, the crop production. So nobody uses just for fun these pesticides. So we have to use them judiciously, but like stewardship for safe use of pesticide, वो हमने while from IRI as the president of Indian Phytosanitary Society also, we have published how it has to be done. We have also covered many of the myths which are diluting the role of agrochemicals in agriculture. These are the few points which came immediately to my mind. Thank you for providing this opportunity. I thank Agarwal sir for providing me this opportunity to come along with you to share some of the things which we are doing. And I am learning many things because I was till now I with the government. I was on the other side of the table now, but at that time also I was very much compassionate about farming, and I used to realize the real need of the farming community. So my idea remains the same. मेरा feelings भी वही है, but then I am seeing more from the industry point of view, from the farmers point of view, and definitely we will emerge victorious at the end. And India during this, as we are today celebrating 75 years of independence and आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग मना रहे हैं, धानुका उसमें अग्रगणी है, वन ऑफ द इंडस्ट्री, डेफिनेटली तो पूरा देश इसे मना रहा है, बट द इंडस्ट्री धानुका इज डूइंग सो मेनी अदर स्टेप्स इनिशिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एज ए नेशनल। थैंक यू वेरी मच।
Now, to grace the occasion with her elegant dance steps, let us welcome Ms. Sharanya Shashikar onto the stage. We are a unique client, but we are released to because you are the कटिंग